Hi team. So let's start. So in the last class, we have discussed about the introduction of introduction to operations management. Sachin Sharma, like I think screen is shared, so let's be little professional, and everything is getting recorded, even your chats. Uh, so we started with the operations management, the introduction. Later we discussed about difference between production and operations management. Like we discussed in detail about how operations management and production management is different from each other. Then we discuss about the usage of operations management or usage of production management, and the conclusion and like how operations management is used in day-to-day life in organizations. Right now, today we will be starting with productivity. Okay, so I'm sharing my screen. I hope it is visible. This Yeah, one sec. Okay. You can put it on chat. If you have any query, I'll take it at the end of the session because I can't see chat once I'm sharing the screen. Okay. So productivity, as the name defined, productivity is it is a measure of economic performance that compares the amount of good services output with the amount of thing that we have put in input. Input हमने last class में discuss किया था. It is not just raw material. It is everything that we are putting into that particular product, from human to labor to raw materials to machinery to logistic to operations, everything. And जो उसका output आता है वो क्या है and how much is the difference. Like we can think of productivity as a ratio of the output over input. The more we income, the more productivity, right? आउटपुट ऊपर होता है, इनपुट नीचे होता है. जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट्स अ रेशियो. तो जितना आउटपुट ज्यादा होगा उतना ही फिर आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, राइट? और जितना अगर इनपुट बाई चांस आउटपुट से ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी फिर आपकी लेस देन वन भी रहती है. Correct. So this is a formula of productivity. So productivity is an, in economics it is measure output per input unit, such as labor capital that we have discussed. It is often calculated for the economy as a ratio of GDP. अब GDP जो हम आप सुनते हैं कि GDP बढ़ गया है या 4 this है, 4.2 है, कभी डाउन होता है, तो डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली इनपुट बढ़ेगा, इसलिए हमारा जीडीपी का वैल्यू कम हो जाती है. अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी. So labor productivity may be further broken down as a sector to examine trade labor growth, right? तो productivity का meaning आपको समझ में आ गया. I hope it's like output per input ratio. And when productivity fails to grow significantly, it limits potential gain in wages. So productivity कम होगी तो automatically profit भी कम होगा. तो it will affect the economy of that country. So ये सब interrelated chains होती हैं. So the calculation of productivity हम समझ गए. And so this is the introduction to productivity, right? It is a key source of economic growth and competitiveness. So a country's ability to improve its standard of living depends almost entirely on its ability to raise the output per worker. आप ये लगा लीजिए प्रोडक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी कंट्री की या पूरी उस एरिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस पर डिपेंड होता है. बिकॉज जितना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट होगा, उतना लोगों की सैलरी बढ़ेगी, उतना ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एंड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क. सो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे, वो यू प्रोडक्टिविटी ग्रोथ मॉडल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमीज एंड डिटरमाइन द बिजनेस साइकिल, राइट? इम्पोर्टेंस हमने कर लिए. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगी तभी हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. जो हमारा कंपटीशन है उससे हम कैसे बेटर हो सकते हैं. एफिशिएंसी इज द अल्टीमेट गोल, राइट? सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, हम मेजर कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, लेबर होती है, रॉ मटेरियल होता है. थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं बिकॉज दैट अल्टीमेटली वही सब मिलकर प्रोडक्टिविटी बनाते हैं. पहला होता है लेबर प्रोडक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज लेबर आपको हर इंडस्ट्री में, हर काम में
यूज होगा. So the most common reported productivity measure to labor productivity published by Bureau of Labor Statistics. So this is based on the ratio of GDP to total hour worked in the economy. Correct. जितने घंटे एक लेबर, फॉर एग्जांपल मैं लेबर हूँ, आई एम चार्जिंग 10,000 फॉर अ 8 आवर्स, राइट. तो मेरा एक घंटे का हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट इज वुड बी माई लेबर चार्ज फॉर पर आवर. तो इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. एजुकेशन, एक्सपीरियंस और वर्क फोर्स के बेसिस पे आपको आपकी लेबर चार्जेस मिलते हैं. That you understand, right? Like a construction worker would get this particular amount, or a vegetable vendor, and as compared to other people who are working in corporates, right? So however, productivity is not necessarily as an indicator of health of an economy at a given point of time. For example, प्रोडक्टिविटी मेजोरिटी ऑफ केस में डिफाइन करता है कंट्री की क्या कंडीशन है, बट रेयर केस एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर. लाइक 2009 में यूएस में एक बहुत कॉमन रिसेशन हुआ था, आपको पता होगा. सो आउटपुट एंड आवर्स वर बोथ फॉलिंग व्हाइल प्रोडक्टिविटी वाज ग्रोइंग. तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बिकॉज जो पर आवर वाला था दैट वाज फॉलिंग फास्टर देन आउटपुट. तो जिसके से प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था. लाइक यू नो आउटपुट कम हो रहा था, तो आइडियली प्रोडक्टिविटी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो पर आवर वाले calculation थी that was increasing. So that's the reason. It's very rare case, but this will also can happen. So labor productivity के बाद आता है total factor productivity. I'll just quickly check if you guys have any question. Okay, just give me 1 sec. I will take it from chat, so I don't see anything. So I'm assuming I'm audible. Everything is good. Okay. So now I'll check it after 10 minutes once this types of productivity is over. Okay. So labor productivity के बाद आता है total factor productivity. So there are many factors that impacts a country's productivity. Such things include investment in plants and equipments, innovation, improvements in supply chain, logistic, education, enterprise, and competition. Right. So the slow residual, which is usually referred to as a total factor of productivity. Correct. सो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट हम कितना कर रहे हैं, मतलब जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनोवेशन की क्या स्पीड है, इम्प्रूवमेंट, अगर सप्लाई चेन में इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा. करेक्ट. So these all things are to come under total factor productivity. Next is capital productivity. So capital, as a name indicate, measure look how efficiently physical capital is being used to create goods or services. So physical capital से यहाँ क्या मतलब है, like such as office equipment हो गया, या labor material हो गया, warehouse supplies हो गई. So these all are transportation equipment. For example, कार हो गया, ट्रक हो गया, physical, जैसे जो आपकी आंखों के सामने है, जो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज हो रहे हैं. जैसे किसी लॉजिस्टिक्स में कार, ट्रक्स होते हैं या मशीन्स होती हैं. कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटीज फ्रॉम फिजिकल कैपिटल. लाइक कभी कभी हम लोग लोन पे लेते हैं, या फिर एक हमने ट्रक लिया है फॉर एग्जाम्पल 10 lakhs का, राइट. सो अभी हम उसको भी अपने कॉस्ट में जोड़ेंगे, राइट. अभी उस एक ट्रक से सिर्फ हम एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, उससे हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसका कॉस्ट हम डिवाइड करके उसकी जो लायबिलिटी हमारे ऊपर एक तरीके से कर्ज हो गया 10 लाख का, हम उसको कैलकुलेट करेंगे. दैट इज द कैपिटल प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज मटीरियल प्रोडक्टिविटी. सो मेजर प्रोवाइडेड बाय मटीरियल लुक्स टू मेजर आउटपुट बाय मटीरियल कंज्यूम्ड. सो मटीरियल कंज्यूम्ड कैन बी, हीट भी होती है, फ्यूल होता है, फ्यूल डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो ये सब भी मटीरियल दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन, राइट. So that analyze the output generated per unit. This is material productivity, right. Next is productivity and investment. So जैसे नाम से पता लग रहा है, when productivity fails to grow significantly, it limits potential gain in wages. So जैसे आप देखते हैं कभी कभी प्रोडक्टिविटी या किसी भी कंपनी का जीडीपी अच्छा है पर वो बढ़ नहीं रहा है, किसी कुछ, देयर कुड बी एनी रीजंस, राइट. तो इसकी वजह से सब पे असर पड़ता है. जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज होते हैं उनका एक तरीके से प्रमोशन रोक दिया जाता है, उनकी इंक्रीमेंट रोक दी जाती है. पीछे भी हमने देखा है, राइट. कम कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इससे इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आपका खर्च करने का स्पीड कम हो जाएगी. सो एवरीथिंग इज सो इंटर रिलेटेड. सो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द लेवल ऑफ सेविंग. मतलब
असर कहाँ पे हुआ प्रोडक्टिविटी का, बट उसका इम्पैक्ट आपके घर तक आ जाता है मेजोरिटी ऑफ चीज़ों में, बिकॉज आप खर्च कम करने लगते हो, आपके ह्यूमन बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो प्रोडक्टिविटी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एंड मैनेजमेंट विलिंगनेस नो हाउ टू मेक प्रोसेस इंप्रूवमेंट. ये हम सब कर चुके हैं, राइट. How to calculate productivity we have already discussed. Divide the output of company by the input used to produce the output. So the most regularly used is input in labor hours, right. जो इनपुट होता है वो उसको हम लेबर आवर पे कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि कभी कभी आउटपुट कम हो रहा होता है तो आइडियली प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए, बट रेयर केसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बिकॉज लेबर और आवर्स भी कम हो रहे होते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ कम होंगी. सो मतलब वो 10 कम हो रहा है, वो भी 10 कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो सम होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इट विल बी सेम. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 10,000 बनानास. पिछले महीने उसने प्रोड्यूस करे, मतलब बनाना तो ऑब्वियसली वो है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. चलो 10,000 कार्स बनाए हैं, राइट. वाइल बीइंग बिल्ड फॉर 5,000 आवर्स, एक घंटे का 5,000 लिया है. सो प्रोडक्टिव वुड बी सिंपली डिवाइड बाय 10,000 बट 5,000, दैट इज इक्वल टू 2. करेक्ट. अब इसका जो मिलियंस में भी हो सकता है, डॉलर सेल्स, कार तो ऑफ कोर्स मिलियंस में ही होगी, है ना. सो दिस इज हाउ प्रोडक्टिविटी इज मेजर. सो अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं तो टोयोटा, सबने नाम सुना है. It offers a prime example of high end productivity in real life. So the company has a very humble beginning and has grown to become one of the largest, most production car in the world. Toyota production system, which is known as TPS, is one of the main reason behind that. Because TPS include करता है environment for constant learning and improvement, जैसा हमने नीचे देखा importance में, like a standardized system of constant equality and the elimination of waste. What are the four essential components of productivity? Right, ये हमने कर लिया. No, I think we'll cover it later, right? So, four essential components of productivity is strategy, like or ability to plan, focus or the ability to pay attention at a task, productivity choosing or the which means the ability to choose the most important task and make right decision, and consistency, the ability to work at a consistent pace. हम लाइक इम्पोर्टेंस हमें पता है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को ऑलरेडी डिस्कस. एंड प्रोडक्टिविटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको आउटपुट बढ़ाना है, जिसके लिए दे कुड बी रीजन, लाइक टास्क आप ऐसे असाइन करिए, या कंप्लीटिंग योर टास्क इन बिफोर टाइम. सो तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट. So I think this is all about productivity. Mm, like the how do you show productivity at work? So productivity, like you have to set up a goal. You have to focus on one task at a time. जैसे task complete होता है, you have to meet the deadlines on time. You have to be on time. You have to take productive breaks. Focus on the large tasks, right? So this is all about productivity. Now, please drop your question over here. One second. Yeah, Neeraj, I think your hand is up. So if you have any query, please let me know. Screen is not changing. It is showing first page. Yeah. Slide, because we were just discussing about productivity. Now we'll discuss the next topic, that is the work study. So we'll change the slide. Okay, that was only doubt. Like if you have any doubt related to productivity, please let me know. And I would suggest like don't focus more on slides. It has just headings. Just focus on what I'm teaching, and rest with on content you will get it easily in your books. So can you tell us a summary about the last class? Oh yeah. Okay. So in last class we discussed about the operations management, the introduction to the operations management. HP was let me just you know uh, like answer Riaz out first. So in the last class we discussed about operational management, how operational management is linked with strategic and management involved with the
operations, how each companies have their operations, and how these operations is basically affecting the cost and the productivity or efficiency. Like every company wants the product to be efficient, like उसका सबसे ज़्यादा असर होना चाहिए जो अल्टीमेट गोल के लिए बनना है, विद इन द लेस कॉस्ट इंक्लूड. तो लेस कॉस्ट कैसे होगी वो, उसके लिए वी हैव स्टडीड द सेपरेट फैक्टर्स, हाउ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, you know. Okay, and then we discuss in a very brief about the productivity, which we start discussing in detail today, right? So that was more. You can go through the books and notes that I'll share. So I think that would be enough. Still, if you have anything, we can discuss. HP is asking the essential of productivity. I think I shared the slide. So productivity, आप ये लगा लीजिए, प्रोडक्टिविटी अगर नहीं है तो योर कंपनी, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर एवरीडे डे टू डे लाइफ विल कोलैप्स. कुछ होएगा ही नहीं, बिकॉज कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो और अगर उसके कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट, उसका आउटपुट ही अच्छा नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट, राइट, बिकॉज यू विल गो इनटू लॉस एंड यू विल, आप डेप्ट में चले जाओगे. मतलब आपने अगर कोई लोन लिया तो वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे. और प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली, प्रोडक्टिविटी लाइक इट्स अ टेंजेबल वर्ड, लाइक वो होना जरूरी है. एंड एसेंशियल इज लाइक कॉस्ट. आपका कॉस्ट कटिंग होता है अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है. आप कॉस्ट कटिंग होगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी कंपनी विल बी ग्रोइंग, राइट. उसका ग्रोथ रेट अच्छा दिखेगा. इट विल गिव अ गुड अमाउंट ऑफ सेक्शन इन द कंट्रीज इकोनॉमी. कंट्रीज इकोनॉमी से ग्लोबल लेवल पे हमारा कंट्री रिकॉग्नाइज होगा. तो एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप रिलेटेड टू ईच अदर. I hope that makes sense. HP, and what's your full name? I don't know, but it's coming as HP. Arka Parva is asking how to measure productivity as a work at a workplace. See, we have to, productivity का measure करने का तरीका है, हम output हमारा क्या बना है and as compared to input, हमने कितना डाला था. तो output will always come up, input will always come down. So ideally आपका productivity 1 से ऊपर होगा. अगर नहीं है तो you are in loss. So that is a concerning thing. But if अगर आउटपुट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो 1 से ऊपर ही चला जाएगा. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो वो अदरवाइज नेगेटिव है. अदरवाइज अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला बड़ा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी आपकी गुड है. अब आपको मेजर करना है कि आपकी लास्ट टाइम कितनी थी. उस बेसिस पे यू कैन से कि वी हैव इम्प्रूव्ड और नॉट. आई होप इट मेक्स सेंस, आरका. ओके, thank you guys. If anyone else has any query, uh, put it down. We'll go to the next topic and I'll take the queries later. Okay, thank you for confirming. So next topic is work study. Guys, can you give me 20% left? How much time? I hope my screen is visible, right? I think I'll be able to manage this class. But if not, then I'll check the charger. Okay. So work study, as the name indicate, it is a systemic, it is a investigation by means of consistent system of the work done in an organization in order to attain the utilization of resources. अब हमने रिसोर्स एक्वायर कर लिए हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो. जैसे अगर हम बेकरी बना रहे हैं तो हमने आटा लिया, वी हैव टेकन ऑयल, वी हैव टेकन फ्लेवर्स एटसेट्रा. तो वो मशीन है. फिर हमने लेबर ली है, अपने पास फॉर एग्जांपल 4 लेबर्स हैं. तो अब हम उसको प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमने ले ज्यादा लिया और हमारा काम इतना है नहीं. तो अगर वो नहीं होगा तो आपके अल्टीमेटली इनपुट ज्यादा हो जाएगा पर आउटपुट आपका इतना निकलेगा नहीं. बट अगर ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपने कम लेबर ले रखी है पर काम ज्यादा है, तो इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस. एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? चेक ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी. सो वर्क स्टडी इज अ सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क मेथड्स. Okay, so all the technologies and management system are related with productivity. So work study is one of the basic techniques of improving productivity in order to resolve this aspect, um, to analyze the work in order to achieve the work simplification and thereby improving the productivity of the system, to have optimum utilization of resources, and to evaluate the work content through the work measurements, to set times table for various jobs, जो मैंने डिस्कस किया.
टू एनालाइज द वर्क इन ऑर्डर टू अचीव वर्क सिंप्लीफिकेशन, राइट। सबसे पहले हमको हमारा टास्क पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, उस बेसिस पे विल डिसाइड आवर इनपुट, राइट। उस बेसिस पे विल डिसाइड आवर रॉ मटेरियल, करेक्ट। सो जब तक हमें वो पता नहीं होगा वो, एंड देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे मैंने बोला कि जितना रिसोर्स हम ले रहे हैं हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, अदरवाइज हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी कि हमने फॉर एग्जांपल 4 लेबर ले लिए पर हमारा काम 2 का ही था, तो उस 4 लेबर का कॉस्ट तो हमें पे करना ही है, तो अल्टीमेटली आइदर वी विल बी इन लॉस, और या फिर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। एंड टू सेट अ टाइम स्टैंडर्ड फॉर वेरियस जॉब्स, ये बहुत क्लियर सी बात है। क्या कोई भी अगर काम है, फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनी में मेडिसिन बननी है, तो हर चीज़ के लिए एक टाइम सेट होता है कि फॉर दिस टाइम दिस सेक्शन विल, इससे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं करना है, बिकॉज मशीन उसमें इन्वॉल्व होती है, लेबर उसमें इन्वॉल्व होती है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो सबका वर्किंग टाइम बढ़ेगा, राइट। तो इससे हमारा फायदा होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज वी आर एक्चुअली चेकिंग एवरी स्टेप ऑफ आवर वर्क, वेस्ट नहीं होती है चीज़ें, वो लिमिटेड, एवरीथिंग इज सो पर्टिकुलर, जितना टाइम चाहिए था उतना लेबर है, एंड एफिशिएंट टू वर्क मेथड, राइट। Now, like if you talk about the definition of work study, so it's a generally work study is used to describe a complete set of techniques with the help of which work can be simplified, standardized, and measured. So when it is possible to simplify the existing work or new method are designed or introduced, such as task yesterday, become simpler, then following advantage are possible, right? So more production with less effort, so good products are available at cheaper rates. सो ये बहुत सिंपल बात है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट सॉरी एक प्रोडक्ट से $25 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, बट अगर मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, अगर मैंने सोचा कि मेरे को दिन में $50 का फ़ायदा होता है 2 प्रोडक्ट से, मैं ऐसा करूँगा 10 प्रोडक्ट बनाऊंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 25 आई विल टेक 10 का प्रॉफिट, बट अब 10 प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिए तो 100, मुझे दिन में $100 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो ये हम कर सकते हैं, और लोगों के लिए प्राइस हो गया 25 से 10 कम, करेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द, रेट चीप हो जाते हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ता है। सो दिस इज ऑल्सो गुड टेक्निक, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो better equipment utilization shall lead to marked increase in the total production without addition of new resources, as productivity was may improve. So in industry, work study is considered as a tool for improving productivity in by the way of resource utilization, better time management, capital investment to introduce latest technology, right? So if you talk about why there is a need of work studies, as we have seen, this industry of today's with increased complexity and modernization actually naturally demand of more systematic approach. अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, there are multiple companies coming in the same field. So उसके लिए if you have a proper work study, if you have studied the human behavior, human psychology, consumer behavior, so it will be better for you or your company. uh, One second. Yeah. So if you talk about the techniques of work study, so basically there are two techniques: method study and work management. So method study is related with the study of method of work for a job to design effective and efficient work system in order to achieve process improvement, improve layout, better understanding, better working environment, and reduce fatigue. Whereas work measurement, it is related with measurement of work required for job to arrive at the best method of work, improving planning and control. ठीक है. So the sequential order to of the correct procedure to adopt for having efficient work. सबसे पहले आप सही अपना वर्क प्रोसीजर एनालाइज करेंगे, लाइक आपने जब तक यू विल स्टडी कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज योर्स, देन यू कैन डिसाइड कि हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन related with the existing work system, make critical examination of the data, develop and improve method, install the new system, and then this is how you work. So work measurement हो गया हमारा, and then
So talking about the advantages of work study. One second. Yeah. So advantages, as we have already discussed, direct means with improving productivity. जब आपने वर्क स्टडी अच्छे से कर लिया तो आपका एवरी स्टेप विल बी बेटर, तो productivity will be good ultimately. It result to uniform and improve production flow, and it reducing cost कम होगी. Correct. Sorry, 1 second. And with the help of fast and accuracy delivery, uh, and it provide better services and customer satisfaction because every step is getting monitored, so customer will be satisfied more because cost become होगी है, अगर problem है तो it will be solved at that stage. Job satisfaction होती है इससे, है ना. Job security to workers will increase because everything is positive, then better working conditions, culture of the company becomes better. It is one of the most important tool on the basis of scientific basis. So this is about the work measure. Next would be productivity measurement. Okay. So uh, 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 let me know if you have any query on the work measurement. Otherwise, we'll go to the next topic, that is productivity measurement. Work. This was the next topic after productivity. Okay. So it's 8:30. I'll also get a charger. Let's take 2, 3, 4 minutes of break, and let's regroup at 8:34. Then we'll continue with the next topic. And today we'll hopefully close unit one. So let me know if you have any query by then. Put it on chat. Benefits of work study. किधर गया. Renu, benefits of work study is basically, uh, it will include, direct mean because it directly deal with the productivity. तो वो हमारी cost कम कर देती है, manufacturing cost. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके साथ खुल जाते हैं. कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ गया आपका. कॉस्ट कम होगी तो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई. प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का फायदा है. इट इज लाइक इंटर रिलेटेड टू एवरीथिंग. एक अगर हर स्टेप पे चेक होगा बिकॉज ऑफ वर्क स्टडी, तो यू कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहेगा. कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो कंपनी की ग्रोथ विल बी देयर. सो एम्प्लॉय विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड बिकॉज कल्चर अच्छा हो जाता है. HP, how to do work study. I would prefer when I teach you just listen because this was a very detailed thing, so it's better. Thank you, Renu. Sanjay Lahav on first slide. Which is the first slide you want to see? It was all there for almost 15 minutes. Elements in work study is directly related to productivity. So whatever the product, like labor cost, machinery cost, non-machinery cost, etc., will come in the uh, you know, uh, elements of the work study, right? जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैन, मशीन, लेबर and money. So everything will come in the, what we say, the elements of the work study. Okay, you just remember in this way: 4 M's: machine, money, man, and material. Like raw material you say, but just to remember, it should be 4 M's. Okay. So let's take 5 minutes of break. 8:35 we'll regroup and then we'll start the next topic.
So team, let's start with the next topic, that is the production management. Okay, so productivity measurement अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया इनपुट वर्सेस आउटपुट, बट लेट्स सॉरी आउटपुट वर्सेस इनपुट, बट लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल, राइट? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी इज सेंट्रल टू योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जैसे हमने बोला कि प्रोडक्टिविटी इज एवरीथिंग, उसी के बेसिस पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, उसी के बेसिस पे सारा सक्सेस पूरा डिफाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो अभी इसके लिए हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू मेजर द प्रोडक्टिविटी? Simple answer is to monitor the performance, कि how my team is doing, how my company is doing, how my country is doing. So your team works hard to keep your projects moving and with your organization profitable, but there are some ways to you can improve your team's workflow and do even more same amount of time. इससे ज़्यादा आप इसी टाइम में कर सकते हो, और this is what we call continuous improvement. So why productivity measures? It's very simple. Four types of productivity measures are uh, how to use productivity measures in the workplace, right? So प्रोडक्टिविटी मेजर्स आर बेसिकली मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स मतलब मेजर करने का कोई भी टेक्निक होती है दैट ट्रैक्स योर टीम्स एफिशिएंसी इन अकम्प्लिशिंग देयर टास्क, सो दे कैन हेल्प यू मैनेज योर टीम्स परफॉर्मेंस एंड फिगर आउट वेयर एवरीवन एल्स कैन improve, right? So productivity measures compare the resource, time, tool, energy you can uh, use their on the basis of their time and resources. Productivity बढ़ेगी, like foster productivity, so reap the way. So types above other types of productivity. First is capital, material, labor, and machine. So there are few different measures of that you can use to assess your team's productivity. Each one look different factors, but in the big but complex wheel of getting from starting from the finishing line. ये सब आपस में interrelated होते हैं, देखने में ये अलग लगेगा. So first is material productivity, which is also known as capital productivity. So capital productivity measures how well your team is using physical capital. जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर जैसे कोई ट्रक खड़ा है या कोई मशीन है तो वो उसका प्रॉपर यूज हो रहा है जिसके लिए वो आया है, एंड जिसके ऐसे बिकॉज उसका जो हमने लोन लिया है, उसके जो हमारे पास एक लाइबिलिटी है, लोन भी नहीं लिया है, तो वो हमको हर एक यूनिट जो बन रही है उसमें उसका कॉस्ट जाना है। ज़्यादा भी नहीं डाल सकते बिकॉज कॉस्ट हाई होगा, कम भी नहीं डाल सकते बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड, राइट? सो सच एज लेबर, मटेरियल, वेयर हाउस, सप्लाईज, कंप्यूटर, व्हीकल, जो हमने डिस्कस किया, फिर कैपिटल प्रोडक्टिविटी आती है। तो टू कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, यू सब्सट्रैक्ट योर लायबिलिटीज फ्रॉम योर फिजिकल कैपिटल, राइट? तो देन टेक अ द नंबर एंड डिवाइड बाय द सेल्स। अब दूसरा आता है मटेरियल productivity. So if your organization provides services instead of product, material productivity might be your go-to productivity measure. It is similar to capital productivity, but instead of looking at the physical capital, it looks at material. So you'll also see materials called natural resources, which here doesn't mean water and land. It is a raw material. So to figure out your team's material productivity, use the capital productivity formula, but replace the physical capital with the natural resources. Correct? Then comes your labor productivity. जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प यू टू सी वेदर ईच टीम मेंबर इज बीइंग प्रोडक्टिव इनफ. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पर पर्सन. करेक्ट? एक बंदा कितना आउटपुट बना रहा है एज पर उसका जो पे है, वो हम प्रॉपरली वो उसको यूटिलाइज कर पा रहा है, अदरवाइज उसका पे ज़्यादा हो गया है या फिर इट इज़ बिकम प्रॉब्लम फॉर द टीम, और इट इज़ लाइक हो सकता है वो अपनी पे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो देन ऑल्सो यू शुड टेक केयर. So this is what labor productivity is. So this type of productivity is the ratio of output per person, but it compares the value of your team's product to how much your team needed. And एक हमने डिस्कस किया total factor productivity. It is called multi-factor productivity measures. So here are the factors go beyond the usual workplace like capital, material, labor. So get your team so total factor productivity, divide the value of your product by the weight average. So ये हो गया मतलब जो it is focused on individual versus the overall inputs. So how to use the productivity metrics, right? First is time tracking.
So if your team is working remotely, you might be find it tough to keep up the each person works. So अगर किसी जैसे अभी पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, तो उसमें आप ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि हाउ मच टाइम अ पर्सन इज स्पेंडिंग ऑन वर्क. So so tracking your team's time, how they spend on it can be a great solution. To start, you will need, मतलब कैसे आप कर सकते हो कि टीम टाइम ट्रैक करने का एक टूल आते हैं. Okay, that really go deep down on how much your team members is spending their time. For example, Monitask करके एक tool है, an employee monitoring software integrated seamlessly with the fellow and record team members time entries, right? कि एक दिन में एक बंदे ने कितना टाइम स्पेंड किया अपने लैपटॉप पर, वो कितना प्रोडक्टिव टाइम था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इस बंदे का अच्छा आज का पे 2000 था एंड इसने 8 आवर्स किए हैं, तो इज इट लाइक गुड, इज इट लेस और इज इट मोर, राइट? उसमें ये भी आता है कि कौन सी ऐप पे कितना टाइम दिया है इसने. Next is simple productivity output calculation. So simple productivity output calculations are the best for assessing the basic product or services your team members have brought into the world. Sorry, they mainly supply the labor productivity since they only include a few factors. Correct? These are the simple productivity. Next is measuring efficiency. इसमें नाम से पता लग रहा है दो similar productivity and efficiency aren't एक से नहीं होते, but productivity is अलग thing. एफिशिएंट इज लाइक वो कितना उसका असर है, कितना वो एफिशिएंट है. प्रोडक्टिविटी इज लाइक कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. करेक्ट? प्रोडक्टिविटी लुक्स एट द क्वांटिटी, मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस क्वांटिटी पे, वेयर एज द एफिशिएंसी इज मोर अबाउट क्वालिटी, कितना वो एफिशिएंट है. सो दैट्स व्हाई मेजरिंग एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Next is 360-degree feedback. So it's if formula and maths aren't your like friend, then you can skip this equation. But you to start, you give team member instruction on how to properly share feedback about their teammates. Give them clear factor to consider such as time management etc. तो वो पूरा एक बंदे को 15 लोग फीडबैक देंगे, सिमिलरली हर 15 बंदे को सब बाकी 15 देंगे. सो ये फीडबैक रहता है, राइट? अब हमने देखा कि वाई इज मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंट. Achieve more in less time, higher revenue using fewer resources, see whether you are meeting targets, helping with scheduling projects, see if everybody is pulling their weight. So achieve more in less time, समझ में आ गया कि ज़्यादा हम अचीव करेंगे कम टाइम में, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज आउटपुट ज़्यादा होगा, इनपुट कम होगा. हायर रेवेन्यू यूजिंग फीवर रिसोर्सेज, बिकॉज हमने हर स्टेप पे चेक कर रहे हैं, तो हमारा रिसोर्सेज कम यूज होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा होगा. और यू नो टारगेट हम मीट कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं. Next is factor affecting productivity. So this is another topic. Let me know if everything is clear in the like introduction to why productivity measurement is important and what is productivity measurement. Let me know if you have any query. I see 2 queries. Give me 1 second. No, efficiency is, see efficiency होगी क्वालिटी. अब क्वालिटी, अगर आप किसी ड्रग की क्वालिटी चेक करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है कि वो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो उसमें आप एफिशिएंसी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. बेकरी के लिए ऊपर नीचे चल जाएगा थोड़ा बहुत, राइट? बिकॉज फार्मा में नहीं चल सकता. सिमिलरली कार का एफिशिएंसी फॉर्मूला अलग होगा कि कार को हम ड्राइविंग उस पर चेक करेंगे, एक हीटिंग उस पर चेक करेंगे. सो एफिशिएंसी का तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं हो सकता, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड. बिकॉज एफिशिएंसी मतलब अब किस चीज़ का कितना इफेक्ट है. मेडिसिन का इफेक्ट तो 100% होना चाहिए, बट जो चीज़ अगर हम बेकरी आइटम खा रहे हैं या स्वीट खा रहे हैं तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. वो टेस्ट होगी, हेल्थ वाइज होगी, लेकिन इट्स नॉट क्योरिंग एनी डिजीज. सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं हो सकता. बट वेरी गुड क्वेश्चन अमित. ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस. कैन यू शो ऑल द स्लाइड टिल फैक्टर्स? Priya, I will say again, I will show it for sure, but don't focus on slide, focus on what I'm teaching. Slides you will get. So factor तक आप सारी slide अभी I'll send it also. ठीक है अगर आपको. And I'm just stopping for 2 seconds. One.
ठीक है, फैक्टर्स हम स्टार्ट करेंगे अब. We have 15 minutes, so I think we can close this part also. So there are different factors that affect the productivity. The productivity हमने समझ ली है कि क्या, what is productivity, why it is important, right? So जो सबसे पहला है उसमें आते हैं, there are basically three type of factor who, मतलब लेकिन internally there are many. So first is इंटरनल फैक्टर आता है जो मतलब इंटरनली कंपनी के अंदर हो सकता है, इंटरनली एक मशीन के अंदर हो सकता है. तो सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, राइट. इसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल फैक्टर्स. Let's go with this way. First is okay. So manpower. So there are various decisions with respect to the factors mentioned below. First is manpower. So selection. That is selecting the right man for a specific task that we have already discussed. कि हमने जो जो हमारा लेबर है वो यू नो इज इट गुड फॉर द टास्क. हमने ओवर हायरिंग तो नहीं कर ली है, हम अंडर हायरिंग तो नहीं है, और जो वो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम लाइक चेक करते हैं मैन पावर में. देन इज इक्विपमेंट एंड मशीन. Equipment and machine is basically internal factor, right? It will come under technology because, but it can come under external also. So number of machines, tool, their capacity, accessories अगर properly काम कर रही है, मशीन के अमाउंट्स तो ज़्यादा कम नहीं है, मतलब हमारा जो प्रोड्यूस करना है उसके बेसिस पे, right? Then input material, like appropriate quality of material require MRP. Then time is a significant of the following reason. At time for inspection of which is good, फ्लोर एरिया हमारा जो है वो करेक्ट है कि नहीं, राइट. पावर और एनर्जी फाइनेंस जो है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट डिफाइन द प्रोडक्टिविटी. सो दीज आर लाइक डिफरेंट, लाइक टेक्नोलॉजी हम ऐसे, बिकॉज एवरी डे इज अ लाइक हर चीज़ इवॉल्व करती है, चेंज करती है. सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर. कभी कभी हमारी जो हमने मशीन हायर ली है या फिर हमारे पास जो लेबर है वो इतनी टेक्निकल नहीं है, या बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है. सो दैट गोज वॉज टेक्नोलॉजी एंड स्किल ऑल्सो. तो स्किल आ सकता है कि फॉर गुड स्किल पीपल यू नीड टू इन्वेस्ट मोर. कभी कभी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. गुड मैनेजमेंट लीड्स टू अ गुड प्रोडक्टिविटी, राइट. ये सब होता है इंटरनल विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द प्रोडक्ट. एक्सटर्नल होता है पॉलिसीज, इकोनॉमी. मतलब अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे, बिकॉज पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, सो दे अल्टीमेटली विल बाय थिंग्स मोर. आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपके पास डिमांड ज़्यादा रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो एक्सटर्नल, बिकॉज इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हाथ में नहीं है, आपके आसपास का, राइट. अब पॉलिसीज लाइक गवर्नमेंट कभी कभी बहुत ऐसी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर देती है जो बहुत इफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को. अब आप जैसे डिमोनेटाइजेशन का ले लीजिए. सो डिमोनेटाइजेशन इज लाइक इट वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, एंड देन जिसकी वजह से लोगों ने खर्च करना बहुत कम कर दिया था. सो दैट वाज लाइक प्रोडक्टिविटी उस टाइम अगर हाई भी होती तो लोग खरीदने वाले नहीं थे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी वेंट वेरी स्लो, करेक्ट. ह्यूमन फैक्टर इज लाइक, ये तो मोटिवेशन, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जैसा हमने डिस्कस किया कि जो जो हमारे एम्प्लॉय है वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए, उनका एंगेजमेंट हाई होना चाहिए, बिकॉज उनको नॉलेज होनी चाहिए जब भी उनका एंगेजमेंट हाई हो सकता है. एंड मोटिवेशन इज लाइक दे शुड बी प्रॉपरली मोटिवेटेड टू वर्क, करेक्ट. environmental factor is like sustainability, and sustainability is basically human buying behavior. बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लोगों का आज बिहेवियर है खरीदने का, बट कल समथिंग न्यू केम इनटू मार्केट, बट आपने प्रोड्यूस कर दिया है. सो ये सब चीज़ें, बाइंग बिहेवियर बहुत इजीली चेंज होता है. एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट इज लाइक, एक चीज़ अगर वो नॉर्थ इंडिया में अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि वो ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में अच्छी होगी. सो दैट इज लाइक कम्युनिटी इम्पैक्ट. So next is you know how to improve productivity. Automation. One second. Let me know if you have any query till now. I am just checking if we are not missing anything, right? Okay.
So automation training and lean practices. Lean practices basically is, you know, agile. Agile is basically on your every step, on your daily meeting, you are checking everything is going on time. Your everyone is getting trained properly. Employees or machine, everything is properly working. Automation is like there should be less of the thing on word, but everything should be documented. So ताकि कुछ problem हो, everybody can refer, and if they have any doubt, they can. अब there are tools होते हैं productivity हमारा बढ़ाने के लिए. Six Sigma is one of the very important and very common course that we do to improve our productivity. Our employees are getting trained and certified for various belts as compared to the score that we receive at them. Same goes for Kaipen and total productivity management. Next is production technology. I think this is the last topic for the unit one. I hope we don't have any question till now, and I'll check the chat again. No. Okay. So next topic is production technology. So production technology in the, if we talk about it, is a defined production tech would be like any machinery that makes creating the tangible physical product possible for a business. To the small businesses, this means a workshop at the very least with a more elaborate operations making use of machine and assembly lines, right? So प्रोडक्शन में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए टूल और मेथड टू फॉर द प्रोडक्शन, राइट? So the modern artisan workshop. So artisan workshop represent the basic minimum efficiency level of modern production technology. So जो सबसे मिनिमम हम प्रोड्यूस करने के लिए जो कम से कम चाहिए होता है, that will be included in the enable modern manufacturing में. And so now you talk about CNC manufacturing and extending the artisan workshop that you have understood. This is the minimum. Like automated assembly line also. Mass production represent the apex of modern industrial production and the driving force behind the industrial titans such as automobile manufacturer, etc. Now, practically consideration for small business. When it comes to investing in production technology, a small business's focus should be on generating the best return on capital investment within the confine of the company's reasonable budget. So the types of manufacturing processes, right? So types of manufacturing processes, there are 6 types of manufacturing processes. It is a making of goods from television and automobile to guitar to clothing. So there are several standards of manufacturing processes applied across industries, and companies can vary, which is why they use a tailor production to design business needs. So what is a manufacturing process? So manufacturing process is how a company builds or create products. That is like very important. प्रोडक्शन, अगर आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसका फ़ायदा क्या है? ये आपकी क्वालिटी इंप्रूव करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है और प्रोडक्शन को बढ़ाती है, करेक्ट? अब दे आर वेरियस टेक्निक्स. अब आप कैसे कौन सी टेक्निक डिसाइड करनी है? तो सबसे पहले वॉल्यूम है. ये हो सकता है एक टेक्निक यू हो एक सिंपल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, दूसरी होगी मेडिसिन के लिए. सो डिपेंड्स कि आपकी क्या वैरायटी है, कॉस्ट कितनी है. कभी कभी टेक्निक्स जो एक्सपेंसिव होती हैं वो फिर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, या आप कितना बल्क में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लाइक जॉब, बैच, मास, कंटिन्यूस प्रोजेक्ट, राइट? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने कर लिया. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर हो उसके क्या प्रोसेस है. अ बिजनेस एस्टैब्लिश इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू स्पेसिफिकली फॉर कस्टमर, राइट? सो जॉब होता है. तो जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग यूजेस प्रोडक्शन एरिया इंस्टेड ऑफ एन असेंबली लाइन एंड इट इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर स्मॉल बैचेस. So custom products and are made to order for certain thing. So with advantage in technology, some of these sites may use shop manufacturing software. Next is बैच मैन्युफैक्चरिंग. सो बैच मैन्युफैक्चरिंग नाम से पता लग रहा है लंबे बैच में जाएगा. सी सिमिलैरिटी विद डिस्क्रीट एंड जॉब, बट
Manufacturing process derive from customer demands or the availability of ingredients, right? Next is continuous process manufacturing. It runs all the time like repetitive manufacturing. Mostly companies होती है जो 24 घंटे काम करती हैं. So it is that continuous process manufacturing. And then next is repetitive is the same like where a repeat production at a committed production rate. जैसे न्यूज़पेपर वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, इट विल बी repetitive, like printing everything in the same process, right? So I think this is all about classification of manufacturing process. Then job production, it is like custom made product, right? इसको तो like it's not a very important topic. Where we discuss about high flexibility, batch production we have discussed. Mass flow production is continuous production, like that we discuss about uh, where companies continuously producing goods. Customers, next is other types of manufacturing, which is not important. Like first is machining. Machining uses power driven tools to shape solid materials and metals by removing extra material. Joining is like pattern considered for the load factors, assembly performance, forming metal forming bends, casting. It's a type of process type, but it's like there are many, correct? So this is all about the continuous manufacturing process. 3D printing is also one of the type of continuous manufacturing process. 3D printing आप जैसे नाम से समझ सकते हैं, अभी आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. इट इज अ 6 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वो हमने 5 जो डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, दिस इज 6, बट ये अभी इंक्लूड नहीं हुआ है because now it has taken a growth. So developed, it was although it was developed in 1980. So the 3D printing uses variety of composites and material like plastics and metals to make three-dimensional goods layer by layer based on a digital model rather than using physical labor or mechanism. So there has been enormous expansion in the field with dozens of equipment manufacturers and hundreds and thousands of 3D printed items already on the market. While 3D printers can be expensive, it is also offers potential to reduce financial capital. Okay, so the growing manufacturing process is already being used for products such as medical and dental device में 3D use हो रहा है. Dental आप समझते हैं, डिजाइन में teeth. मोस्टली मेडिकल इट इज यूज, लिम्स में यूज होता है, जो मेडिकल के इक्विपमेंट होते हैं उस पर 3D इट इज यूजिंग, करेक्ट? So this is all about manufacturing processes. I think the unit 1 is completed. First we started with the introduction to operations management. Then we discuss about this is okay. So we discussed about difference between production and operations management. Later we discussed about productivity. Today we started with productivity and discussed it in very detail. Then we discussed about work study. Later we discussed about productivity measurement, why it is important, what are the various tools, how productivity can be measured. Then we discussed about factor affecting productivity. Last we discussed about production technology, which included measuring capacity and everything.